तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी गैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। ये बीज नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो, चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है।
अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका। शिजुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत गंदे हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? आई एम सॉरी शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे। सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा। प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस नेश पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस देश को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया।
मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे डोरेमोन के रहस्यों के बारे में जो आपके दिमाग को घुमा देंगे। प्यारा नीला रोबोट डोरेमोन हमारा प्यारा नीला रोबोट बिल्ली हमेशा अपने जादू जैसे गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और मस्ती भरे पलों के साथ हमें हैरान करता है। क्लासेस तैयार रखो। लेकिन इस प्यारे से शो के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो सालों से फैंस को उलझा रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी पहन लो, डोराएमोन का सॉन्ग चेक कर लो और चलिए सुलझाते हैं डोरेमोन के कुछ अनोखे राज। ढेर सारे डोरेमोन। पहला रहस्य, पॉकेट का असली मालिक कौन है? तो बिना डोरेमोन की 4D पॉकेट से हमेशा नए नए गैजेट्स निकलते हैं। डोराएमोन मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉकेट वाकई में डोरेमोन की अपनी है? कम्युनिकेट करता है। मंगा के अनुसार ये पॉकेट डोरेमोन का एक हिस्सा है जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि यह पॉकेट भविष्य की किसी गुप्त टेक्नोलॉजी कंपनी की संपत्ति है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। क्या आपको वो एपिसोड याद है जिसमें डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे भविष्य में मरम्मत के लिए जाना पड़ता है? करने वाला कौन? क्या डोरेमोन मरम्मत करने वाला कौन था? क्या कोई भविष्य की संस्था डोरेमोन के गैजेट्स पर नजर रखती है? क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है? और एक और बात, क्या डोरेमोन को हर गैजेट के इस्तेमाल की इजाजत लेनी पड़ती है? यूज करने की परमिशन उसे? ये पॉकेट जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। लिमिटेड है। दूसरा रहस्य, नोबिता की डायरी का राज। इंस्ट्रक्शंस दे हम सभी नोबिता को एक आलसी और लापरवाह लड़के के रूप में जानते हैं। डायरी में कुछ लिखता लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ नजर आता है। सवाल उठता है, उस डायरी में आखिर क्या है? बड़ा हिडन टैलेंट। क्या वह सिर्फ होमवर्क है या कुछ बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है? वो अपनी डायरी को छुपाने की कुछ एपिसोड्स में नोबिता अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल बनता है। क्या उसमें भविष्य की यात्राओं का जिक्र है? डोरेमोन ने अपनी टाइम ट्रैवल फैंस का मानना है कि शायद डोरेमोन ने नोबिता से कहा हो कि वह अपने टाइम ट्रैवल के अनुभवों को डायरी में लिखे ताकि टाइमलाइन सुरक्षित रह सके। और सोचने वाली बात, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? डोरेमोन के गैजेट्स क्या उसमें कोई सीक्रेट गैजेट प्रोटेक्शन है? क्या नोबिता इस डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई संकेत छुपा रहा है? एपिसोड में नोबिता ने तीसरा रहस्य, सुनियो के गैजेट्स का राज। जो डोरेमोन को भी सुनियो हमेशा नए खिलौनों, गेम्स और हाईटेक गैजेट्स से सबको इम्प्रेस करता है। और कभी-कभी हाईटेक गैजेट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गैजेट्स सिर्फ पैसों से आते हैं या इनका कोई और सोर्स है? मंगा में बताया गया कि सुनियो का परिवार मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है। नोबिता की सिंप्लिसिटी। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं। फ्यूचर गार्डियन याद है वो एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। डोरेमोन के गैजेट्स। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट। और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। चौथा रहस्य, शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है। शिजुका डोरेमोन, लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। क्या अगर शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? गार्डियन डोरेमोन से भी जैसे एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। सॉफ्ट साइड। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? फ्यूचर से कोई गैजेट। क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? सोचो।
ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। क्या अगर पॉकेट असल में पांचवा रहस्य जियान का छुपा हुआ नरम दिल। जो टाइमलाइन हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। डोरेमोन को क्रिएट किया। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? डोरेमोन की पॉकेट में एक गैजेट कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। टाइम मशीन पॉकेट का एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। टाइम ट्रैवल का कोर्स पढ़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। जितनी ही मैजिकल है, क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? करने का हिस्सा टाइम मशीन का क्या उसकी गायकी एक इमोशन कवर है? हमें पास्ट एंड फ्यूचर की सैर। ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। क्या कुछ टाइम पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छुपा क्या है? सबसे ज्यादा मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है, फ्यूचर से आते हैं। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं और प्रेडिक्शंस। एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? वीडियो की नोटिफिकेशन। और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? क्या उसकी सिंगिंग? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। और चौथा रहस्य, शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। ये थी शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है। नोबिता की डायरी टाइम मशीन। लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। क्या शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। फ्यूचर से आते हैं। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? ये वीडियो अच्छा लगा। और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? हर नई वीडियो क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? ताकि ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। गैजेट तुम्हारे सवाल। पांचवा रहस्य, जियान का छुपा हुआ नरम दिल। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गायकी एक इमोशनल कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के Ladies and gentlemen, let me ask you something right now. How many times have you said yes when your heart was screaming no? How many times have you smiled, stayed quiet, or played small just to keep the peace, just to be liked, just to be seen as the nice girl? And yet, deep down, you knew you were betraying yourself. Tonight, I want to challenge you to break free from that pattern. Because being the nice girl might win you approval, but it will never win you fulfillment. It keeps you trapped, invisible, and exhausted. This is not about becoming unkind, cold, or harsh. No, this is about reclaiming your power, your voice, and your right to live life on your own terms. It's about drawing boundaries that protect your energy, speaking your truth,
even when your voice shakes, and standing so firmly in who you are that people respect you, not just for being agreeable, but for being authentic. So, if you've ever felt overlooked, underestimated, or drained because you were too afraid to disappoint, this message is for you. Today, we stop being the nice girl, and we start becoming the strong, bold, unstoppable woman you were always meant to be. Saying no is not rejection, it's self-respect. Those words carry a power that most people underestimate, especially those who have been conditioned to believe that their worth comes from being agreeable, polite, or endlessly accommodating. For many, the idea of saying no feels like shutting a door, like letting someone down, like being selfish or rude. But the truth is, every time you silence your no in order to give someone a forced yes, you are not just betraying your feelings, you are chipping away at your own dignity. Respect starts with how you treat yourself, and that includes honoring your own limits. Think about the times you've agreed to something you didn't want to do. Maybe you said yes to working extra hours even when you were already exhausted. Maybe you said yes to a friend who constantly takes but never gives. Maybe you agreed to a relationship dynamic that left you drained and unfulfilled, just because you didn't want to be seen as difficult. Each time your lips said yes, but your heart whispered no. And what happened afterward? Resentment, frustration, a feeling that you were invisible or unimportant. That is the price of rejecting yourself for the sake of pleasing others. When you say no from a place of honesty, you are not rejecting people. You are setting the terms for how you deserve to be treated. A no creates space for your yes to mean something real. It ensures that when you give your time, your energy, your love, it is genuine, not forced or manipulated. People may not always like your no, but the ones who truly value you will respect it, and those who don't respect it, they were never truly in your corner anyway. It's important to understand that saying no is not about being aggressive or cold. It's about alignment. It's about making sure that what you commit to matches your values, your goals, and your well-being. Imagine if you spent your entire life saying yes to everyone else's priorities. Where would that leave your dreams, your passions, your growth? A yes without boundaries eventually leads to burnout, while a clear, confident no opens the door to energy, focus, and self-respect. The fear of saying no usually comes from a deep desire to be accepted. We are taught that rejection is painful, so we avoid it at all costs. But what if the greater rejection is the one we do to ourselves when we ignore our own needs? Every yes that isn't true to you is a form of self-rejection. Respect comes from within. When you respect yourself enough to stand by your truth, others start to respect you too. They see you as someone who values their time, their energy, and their identity. Start small if you need to. Say no to that extra obligation when your plate is already full. Say no to the invitation that drains you instead of excites you. Say no to the favors that leave you resentful. Each time you do, you'll feel a surge of power, a reminder that you are in control of your life. It will feel uncomfortable at first, maybe even scary, but discomfort is the price of growth. Over time, no will no longer feel like rejection. It will feel like freedom. When you master the ability to say no, you reclaim your right to live life on your terms. You step out of the role of the nice girl who bends to please and into the role of a strong, authentic woman who honors herself. And when you live from that place,
your relationships become healthier, your energy becomes stronger, and your life begins to align with your true desires. So remember this: every time you say no to what doesn't serve you, you are saying yes to your self-respect. That is not rejection, it is empowerment. Boundaries don't push people away, they attract the right ones. This is one of the most misunderstood truths in life, especially for those who have been conditioned to equate kindness with endless availability. Many people fear that setting boundaries will make them appear selfish, cold, or unloving, but the opposite is true. Boundaries are not walls, they are doors. They don't lock people out of your life. They invite the right ones in and guide the wrong ones out. They are not about creating distance, they are about creating clarity. Imagine living without boundaries. You say yes to every request. You allow people to take your time, energy, and emotions without limit. You bend, you stretch, and you exhaust yourself trying to keep everyone happy. At first, people may appreciate your compliance, but eventually, the lack of boundaries leaves you depleted. You become resentful, bitter, and drained. And what kind of relationships thrive on that kind of hidden anger? None. Without boundaries, love becomes duty, generosity becomes obligation, and connection becomes one-sided. Now flip the perspective. Boundaries are a way of saying, this is who I am, this is what I can give, this is what I cannot tolerate. They are not about control, but about self-respect. When you communicate your limits, you give people a chance to meet you where you truly are. Those who care about you, who value you, will understand and adjust. They will respect your time, your space, your needs, and in that respect, relationships deepen, because real connection cannot exist without honesty. Boundaries create the foundation for trust. The people who resist your boundaries are often the ones who benefited from your lack of them. They are the ones who are comfortable taking without giving, leaning on you without considering your load, expecting your yes without ever earning it. When you begin to say this far and no further, they may react with anger or guilt, but understand this: their reaction is not proof that you are wrong. It is proof that the boundary is necessary. Boundaries reveal who truly belongs in your life. It's also important to recognize that boundaries are not just for others. They are for yourself as well. They remind you not to overextend, not to give away parts of yourself that leave you empty. For example, if you decide that your evenings are sacred time for rest or family, that boundary protects your energy. If you decide that you will not engage in toxic conversations, that boundary protects your peace of mind. If you decide that you will not tolerate disrespect, that boundary protects your self-worth. Each line you draw is a declaration of your value. Think of boundaries like a fence around a garden. Without the fence, anyone can trample in, pull up the flowers, and leave destruction behind. But with a fence, you protect what's precious inside. The right people will come to the gate, knock, and ask permission to enter respectfully. They will appreciate the beauty of the garden because they know it is cared for. Boundaries don't shut out love. They create the conditions where love can flourish without exploitation. When you begin to set boundaries, you may feel guilty at first. That guilt is not a sign that you are wrong. It is a sign that you are breaking an old pattern of self-abandonment. With time, guilt will fade and be replaced with strength, clarity, and peace. People around you will start to see you differently, not as someone who can be taken for granted, but as someone who knows her worth. That shift will attract healthier, more balanced relationships into your life. Boundaries are not the end of connection. They are the beginning of real connection.
They protect you, honor you, and attract those who truly value you. When you stop fearing that limits will push people away, you realize that the right people are not pushed away at all. They are drawn closer because they finally see you as you are, authentic, strong, and worthy of respect. That is the gift of boundaries. They don't reduce love, they refine it. Approval is temporary, but authenticity is forever. That truth is a wake-up call for anyone who has ever lived their life chasing the applause of others, only to feel empty the moment the clapping stops. Approval is like a sugar rush. It feels good in the moment, but it fades quickly, leaving you craving more. And so many people fall into the trap of living not for themselves, but for the fleeting nods and compliments of others. They say what others want to hear, they do what others expect, and they silence parts of themselves just to be accepted. But the cost of this pursuit is enormous. You lose touch with your true self. The problem with approval is that it is never stable. What pleases people today may disappoint them tomorrow. Opinions change, preferences shift, and expectations evolve. If your identity is built on the foundation of external approval, then your sense of worth will always be fragile. You'll constantly feel like you have to perform, adjust, and compromise who you are just to stay in people's good graces. That kind of life is exhausting because you are never truly free. You are imprisoned by the shifting moods and judgments of others. Authenticity, on the other hand, is permanent. It is rooted in truth, in the core of who you are. When you choose authenticity, you choose to live in alignment with your values, your beliefs, and your desires, regardless of whether people approve or not. Authenticity doesn't mean everyone will like you. In fact, some people may walk away, but the ones who remain are the people who love you for who you are, not for the mask you wear. That kind of connection is rare, but it is real, and it lasts far longer than the shallow praise that comes from pretending. Think about the people you admire most in life. Are they the ones who always played it safe, always said the right thing, always bent themselves to fit in? Or are they the ones who were unapologetically themselves, even when it made them unpopular? True leaders, visionaries, and change-makers are rarely universally approved of. But they are authentic, and their authenticity outlives the noise of criticism or applause. Approval fades, authenticity leaves a legacy. Living authentically also means accepting that not everyone will understand you, and that's okay. You are not here to be understood by everyone. You are here to live fully as yourself. When you release the need for constant approval, you begin to feel a sense of liberation. You stop performing and start living. You stop asking, "What will they think of me?" and start asking, "What do I think of myself?" That shift is where real confidence is born. The irony is that the more authentic you are, the more respect you actually attract. People can sense when someone is real versus when someone is faking it for validation. Authenticity has a magnetic quality. It may not win you the approval of the masses, but it draws the right people, the ones who truly align with you. And those connections built on truth are worth infinitely more than superficial approval. When you are authentic, your peace of mind grows because you are no longer at war with yourself. You don't wake up wondering which version of yourself to be today. You simply wake up and live as you are. And in that place of honesty, life becomes simpler, freer, and more powerful. Approval will come and go, but authenticity will sustain you through every season of life. So stop chasing the applause of the crowd and start honoring the voice within. Because when the crowd is gone,
the only person left to live with is yourself. And that person deserves nothing less than the truth. Pleasing everyone else means abandoning yourself. This is one of the most dangerous traps people fall into, especially those who crave harmony, love, and acceptance. On the surface, being a people pleaser looks noble. You're always available, always helpful, always agreeable. You sacrifice your needs for the comfort of others, and at first, it feels like you're being kind. But beneath that surface is a painful truth. Every time you bend yourself to keep others happy, you lose a piece of your own identity. You begin to live as a reflection of what others want, rather than the reality of who you are. The danger of pleasing everyone is that everyone is endless. One person wants you to act one way, another person wants you to act the opposite way. No matter how much you try, you can never satisfy every expectation, because people's desires and demands are infinite and often conflicting. The result, you run yourself ragged, always trying, never enough, and when you measure your worth by how happy others are with you, you give away control of your life. Your happiness becomes dependent on external approval, which means it can vanish in an instant. Abandoning yourself doesn't happen overnight. It happens slowly in small moments. You say yes to something you don't want to do. You silence your opinion to avoid conflict. You take on responsibilities that aren't yours. At first, you convince yourself it's no big deal, but little by little, your true desires, dreams, and needs are pushed to the background. Eventually, you wake up one day feeling lost, wondering who you even are anymore. That's the cost of a lifetime spent trying to please everyone. You disappear from your own life. There's also another danger to people pleasing. It breeds resentment. When you constantly give and give while receiving little in return, frustration builds. You start to feel unappreciated, invisible, even used. And yet, you keep smiling on the outside while hurting on the inside. That inner conflict is painful because deep down you know the truth. You betrayed yourself to keep others comfortable. Real kindness does not require you to erase yourself. Real love does not demand your self-sacrifice. If people only value you when you abandon yourself, that is not love. It's exploitation. The truth is, you cannot pour from an empty cup. By constantly pleasing others at your own expense, you drain your energy, your joy, your spirit, and when you are depleted, you have nothing authentic left to give. Ironically, in trying to make everyone happy, you end up less capable of truly supporting the people who matter most. The strongest gift you can give the world is your full, authentic self, not a watered-down version molded to fit everyone else's expectations. Choosing yourself does not mean you stop caring for others. It means you set boundaries so that your giving comes from a place of strength, not weakness. It means you say yes when you genuinely want to and no when you need to. It means you recognize that your life is yours to live, not a stage for everyone else's script. When you stop abandoning yourself, you reclaim your freedom. You realize that not everyone has to like you, and that's okay. What matters is that you like yourself, respect yourself, and honor your truth. People who truly care about you will not leave because you stopped people pleasing. In fact, they will respect you more because your relationships will be based on honesty instead of compliance. And those who leave, they were only attached to the version of you that existed for their benefit. Losing them is not a loss, it's a liberation. So stop trying to please everyone. Stop trading your authenticity for approval.
Stop abandoning yourself in the name of harmony. Your voice, your desires, and your boundaries matter. And when you begin to honor them, you don't just find yourself again. You find peace, strength, and the kind of relationships that thrive not because you disappear, but because you finally show up as who you really are. Power comes from courage, not compliance. Too often, people confuse going along with the crowd, staying quiet, or following the rules as strength. They think that if they obey, if they avoid conflict, if they never rock the boat, they'll earn respect. But compliance is not power, it's submission. It may keep you safe, it may keep you accepted, but it will never make you powerful. Real power is born the moment you find the courage to stand in your truth, even if it means standing alone. Courage is not the absence of fear, it's moving forward despite the fear. Every great act of growth, every breakthrough, every transformation begins with a single moment of courage. Think about the people who inspire you most. Are they the ones who always followed the rules and kept everyone happy? Or are they the ones who dared to speak up, dared to try something different, dared to take a risk even when it scared them? Courage has always been the seed of progress, while compliance only preserves the status quo. When you live in compliance, your life is controlled by others. You make choices based on what they want, what they expect, what will avoid their criticism. In doing so, you give away your power. Your dreams get smaller, your voice gets quieter, and your spirit becomes weaker. You start to live a second-hand life, one shaped by everyone else's opinions instead of your own conviction. It feels safe on the surface, but inside, you know something is missing. You know you were meant for more. Courage is the antidote. Courage says, I may not have all the answers, I may feel afraid, but I will act anyway. Courage is the voice that pushes you to apply for the job you don't feel fully qualified for, to start the business others doubt, to walk away from the relationship that no longer honors you. Courage is saying no when compliance screams yes. Courage is telling your truth when silence would be easier. Courage is refusing to shrink even when others are uncomfortable with your growth. What's powerful about courage is that it builds on itself. The first step feels terrifying, but once you take it, you realize you survived. Then you take another, and another. Each act of courage strengthens you, while each act of compliance weakens you. Over time, courage becomes your habit, your identity. You stop waiting for permission and start creating your own path. That's when people start to notice. They see your strength, your authenticity, your boldness, and that's when true respect begins. It's important to understand that courage does not guarantee comfort. In fact, courage often leads you straight into discomfort, but growth always lives on the other side of discomfort. Compliance might feel comfortable in the short term, but in the long term it leaves you unfulfilled. Courage, on the other hand, may feel scary in the moment, but it leads to empowerment, confidence, and real freedom. Power is not about controlling others. It's about controlling yourself. It's about having the courage to make decisions aligned with your values, regardless of whether others approve. It's about standing tall in the storm, knowing that your strength comes from within. When you choose courage over compliance, you stop being a passenger in your life and start being the driver. The world does not remember those who complied their way through life. It remembers those who had the courage to be different, to speak truth, to live boldly. That same power is available to you the moment you stop seeking safety in compliance and start seeking strength in courage. Because at the end of the day, it is not obedience that transforms your life. It is bravery. Stop seeking permission. Start owning your voice. For far too long,
Many of us have been waiting for someone to tell us it's okay to dream big, waiting for someone to validate our choices, waiting for someone to say, yes, you can do it. This mindset keeps us stuck, small, and dependent on the approval of others. But here's the truth. The only permission you ever needed was your own. The moment you realize that, your life begins to change. Seeking permission comes from fear, the fear of judgment, the fear of rejection, the fear of failure. We ask, what will they think? Before we even ask, what do I think? We hesitate, we hold back, we second, guess ourselves. And every time we do, we give away a little bit of our power. We allow other people to dictate what we can or cannot do, and in the process, we silence the most important voice of all our own. That silence becomes a habit, and before long, you forget what your voice even sounds like. Owning your voice is the opposite of waiting. It is a decision to step forward without asking for approval. It is about speaking your truth, even if it shakes, making decisions that align with your values, and standing behind them with confidence. It's about realizing that your dreams, your goals, your passions are yours to claim, not because someone else says yes, but because you do. The most successful, fulfilled people in history didn't wait for permission. They acted, they trusted themselves. They used their voices to carve paths where none existed. When you start owning your voice, you stop living as a shadow in your own story. You stop holding back in meetings, in relationships, in opportunities. You begin to speak up, not to please or to provoke, but to contribute authentically. People notice when someone owns their voice. It carries a different energy, one of conviction, clarity, and strength. And that energy is magnetic. It inspires others to listen, to respect, to follow. But most importantly, it inspires you to trust yourself. Of course, using your voice doesn't mean everyone will agree with you. Some will criticize, some will disagree, some may even walk away. And that's okay, because the goal is not universal agreement. The goal is authenticity. If your voice never offends anyone, chances are you're not speaking your full truth. Courageous voices don't aim to be liked, they aim to be real, and realness is what ultimately connects you with the right people, the ones who value you for exactly who you are. There's also immense freedom in realizing you don't need to wait. You don't need to wait until you feel ready, until someone else approves, until the conditions are perfect. Owning your voice means you take the leap now, with what you have, and you trust yourself to figure it out along the way. Waiting is a form of self-doubt. Action is a form of self-trust. The moment you choose action, you send yourself a message, I believe in me. That belief is the foundation of empowerment. Start small if you must. Speak up in a situation where you would normally stay silent. Express your opinion without apologizing for it. Set a boundary without over-explaining. Each time you do, you strengthen your voice, and as your voice grows stronger, so does your confidence, your presence, and your influence. At the end of your life, no one will remember how perfectly you followed the rules or how carefully you avoided rocking the boat. What they will remember is whether you lived boldly, authentically, unapologetically, and that starts with no longer asking, am I allowed? And instead declaring, I am choosing. Stop seeking permission, start owning your voice, because the world doesn't need another quiet approval seeker, it needs the real, powerful, unstoppable you.